So hello everyone. Today we'll start paper 2022 of language section English. So here we begin with question number 61. Identify the speech used in given sentence. The camel is the ship of desert. Options are pun, personification, apostrophe, metaphor. तो मेटाफोर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, वही कंपैरिजन के बारे में बताता है. तो कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, क्या ये कंपैरिजन हो रहा है? ये तो ऐसा कुछ नहीं दिख बता रहा, तो पेंटा फिर नहीं होगा. पन एक ह्यूमरस चीज़ होती है, ह्यूमरस होता है किसी एक सिंगल वर्ड को एक रिपीटिशन ऑफ वर्ड से, ठीक है, तो वो भी ये नहीं है. दिस इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज कैमल इज पर्सोनिफाइड एज अ शिप ऑफ डेजर्ट. पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या बताया था हमने कि जो ह्यूमन और इमोशन थिंग्स को कैरेक्टराइज करे नॉन ह्यूमनिस्टिक थिंग्स पर, नॉन ह्यूमन थिंग्स पर, ठीक है. तो इसका आंसर पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. आगे चलते हैं. चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस टू द गिवन स्टेटमेंट. तो वॉइसेस में क्या मैंने बताया था कि टेंस चेंज नहीं होता है, नो चेंज. टेंस हम आगे पढ़ेंगे, वर्ब के बाद हमारा टॉपिक टेंस ही है. प्रियंका हैज़ सॉल्व द इशू, ओके. और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है. तो द इशू, द इशू, द इशू, द इशू, ठीक है. हैज़ सॉल्व द इशू, तो इज़ तो नहीं आएगा बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट पे है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस तो चेंज नहीं होगा. फिर आता है हैव, हैज़ और हैड बीन. हैड भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी नहीं होगा. अब आता है हैज़ और हैव. द इशू विच इज ऑब्जेक्ट नाउ बिकम्स सब्जेक्ट. हैज़ बीन सॉल्व और हैव बीन सॉल्व. अब हमारा आंसर होगा सी. क्यों? क्योंकि द इशू जो है वो सिंगुलर टेंस है, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ जो केस आएगा वो हैज़ आएगा, ना कि हैव, ठीक है. तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास हैव. द इशू, द करेक्ट आंसर होगा हैज. द इशू हैज बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका, ओके. आगे चलते हैं. हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड. अब इसमें क्या है, तो फॉलोइंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ओके. तो हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड, नो सूनर, नो सून, नो सूनर, नो सूनर. अब एक रूल है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, इसको आप याद रख लें, ठीक. नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड, ओके. नो सूनर हैड राम सीन मी ही कॉल्ड, नो. नो सूनर राम सीन मी कॉल्ड, नो. नो सूनर हैड राम सीन मी दैट ही कॉल्ड, नो. द करेक्ट आंसर इज नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड, ठीक है. ये इसका रियल मतलब होगा कि उसने मुझे तब, नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड, जब उसने मुझे देख लिया मैं कहीं नहीं मिली तब उसने मुझे कॉल किया, ठीक है. आगे चलते हैं. रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू. तो ये PYQ है जो भी हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन हैड वॉच द. इसको मैंने पहले समझा चुका हूँ मैं, अब वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है. आगे चलते हैं. The alphabetic method, the phonic method, the board method and the sentence methods are associated with reading, ठीक है. ये भी PYQ है, ये भी हमने आगे सॉल्व किया हुआ है. आगे चलते हैं. लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, ठीक है. लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, ओके.
Writing good books in that language? No. Learning and using language skills in appropriate situations should be the right answer. ठीक है, आगे चलते हैं. Which among the following is an example of onomatopoeia? Onomatopoeia के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, जो एक साउंड क्रिएट करें. ठीक है, तो स्मोक से रिलेटेड है, यूनेस्को भी इससे कोई मतलब नहीं है. बज साउंड होती है यूजुअली, अगर हम ध्यान रखें तो हनी बीज के थ्रू जो साउंड आती है. इसका आंसर हो जाएगा सी. आगे चलते हैं. TBLT is second language teaching is task based language training. This is the right answer for this. ये फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, इसको ऐसे करेंगे हम लोग. एक मिनट, या सॉरी, ये Which one of the following activities come under CALP? Making reservations? No. Answering calls? No. Making an appointment for salon? No. Writing a book review? Yes, because it is cognitive advanced language and what P stands for, ये मैं भी आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ पाया. Which of the following activities comes under cognitive advanced language? Making reservations? No. Answering call? No. Making an appointment for someone? Writing book reviews is one of those things. Okay. Going again. What is the status given to English by the Indian Constitution? Status given to English by the Indian Constitution. National language? Linked language? It is no, or not official. Associate official language, because we have Hindi too. This is also a PYQ. Okay. हम लोग इसको भूल गए थे 69 को. स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी teaching is aimed at learning morals. Storytelling, learning morals. Okay. Learning to retell the story? No. Engaging learners with language is the right answer. Okay. And yeah, these are done. Yeah, going for this passage. But first we'll read the questions. Where was the poet? In city, in desert, in the forest, on highway? Why did the poet want to take the less traveled road? To avoid bumpy ride of another road? To get lost in the dense forest? In the hope of discovering something new? Or he likes puzzle? Let's see. What does the poet's long stare at the path signify? Poet's long time taken by the people to decide and make choice? Poet love nature, idling away of time, or relaxation hours? Let's see. Mention the figure of speech used in and having perhaps the better claim. Okay, let's read. Two roads diverged in yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller, long I stood, and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no stepped had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. The question is, where was the poet? In city, in desert, in forest, or in highways? Two roads diverged in a yellow wood. So this yellow wood signifies forest. It's the other way of talking about forest. The correct answer of 72 should be C, in the forest. Why did the poet want to take the less traveled road? To avoid bumpy ride of another? No. To get lost in the dense forest?
No, in the hope of discovering something new, because as it is mentioned, that I took the less traveled road, that has made all the difference. And it is also mentioned, sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as one far as I could, to where it bent the undergo. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there. So, in the hope of discovering new, he took the one that is less travelled. Okay. What does the poet's long stare at the path signifies? So, the time taken by the people to decide and make choice should be the, because these things, relaxation hours, idling away of time, and poet's love for nature is not mentioned. It is the time taken by the people to decide and make the choices. Okay. 75th, mentioning figure of speech used in and having perhaps the better claims. So, is it talking about comparison anywhere? So, both these things, similar and metaphor, will not be there because it is not talking about comparison. Okay, and alliteration is repetition of a word, which is also not here. So the answer would be person PQ. यहाँ पे हम आंसर एलिमिनेशन के थ्रू यूज़ किया हमने, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आया कि हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम इज टॉकिंग अबाउट व्हाट. एक बार हम पोएम को फिर से पढ़ेंगे जिससे हमें समझ में आए कि और क्या वो कहना चाह रहा है. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, then took the other as just as fair, and perhaps having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, if I doubted I should ever come back, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and it took one. I took one the less travelled, and that has made all the difference. Okay, so अभी हम आज 15 क्वेश्चन ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट 15 कंप्लीट करेंगे. ओके.